everyone. Hope all of you are fine. I'm here again to deliver another lecture about the normal distribution, and today we are going to perform the questions regarding the normal distribution. Alright, and alright, here is the So today we are discussing in our lecture number 6, it's lecture number 6. In this lecture we are going to discuss the example number 10.2 and 10.3. I have merged different parts from both the examples, and I have made a single question, that is, if z is a standard normal random variable with mean 0 and variance 1, then find. We want to find the probability, it's a cumulative probability. Remember, in our previous lecture, we have talked about the exact probability or the ordinate, which we solved by using table number 7. Now, in this lecture, we are talking about the cumulative distribution or the cumulative probability. So if you have a standard normal random variable z and you want to find the probability that z is less than minus 1.96, which is basically our part 1, first part of the question. See, if you want to find the probability that z is less than 1.96, so we have discussed, if you remember in our previous lecture, in some of our previous lecture, I have discussed about the theorem number 10.3 and 10.4. Okay girls, I am using this mod, and I will find the probability using a table and will solve it in the calculator. Okay, I want to find probability that z is less than 1.96. So as it is clear, the cumulative probability, we always find cumulative probability in less than form. यानी हमारे पास अगर cumulative probability का मतलब होता है एक particular point से less सारा area. So आपके पास जब भी z की probability find out करें, it should be in less than form. और आपको मैंने बताया था using theorem 10.3 part 1. ये आपकी बुक में अवेलेबल है, मैंने रेफरेंस भी इसीलिए दिया है. थ्योरम नंबर 10.3 पार्ट 1 ये कह रहा है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है z की विच इज़ लेस देन अ पर्टिकुलर पॉइंट a, तो दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ a. और आपके पास ये जो टेबल है, दिस इज टेबल नंबर 9, ये आपको फाई ऑफ a की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है. This is the standard normal cumulative distribution function. So we will use this function, use this table. In this table, we have probabilities at the center, and we have the value of z on the first upper row and column. Okay, if you want to find the probability that z is less than minus 1.96, that means using theorem 10.3, probability z is less than a particular point is equals to phi of a. And if you want to find phi of a, here, this probability is equals to phi of a is minus 1.96. अगर z is less than a की probability जो है वो phi of a के बराबर है, तो ये भी तो वही फॉर्म है. इसमें ये वैल्यू जो है वो a की वैल्यू है minus 1.96, so we want to find phi of minus 1.96. Now we will use table number 9. Okay, let me mention here by using table number 9. मैंने minus 1.9 को 6 में देखना है. ये टेबल जो है आपके पास, ये 2 डेसिमल नंबर्स को डील कर रहा है. z की 2 डेसिमल नंबर्स तक वैल्यूज होनी चाहिए, तब हम ये टेबल इस्तेमाल करते हैं. हमारे पास minus 1.9 को हमने 6 में देखना है.
So we will find minus 1.9. This is minus 1.9 and we will find 6 on the column. Okay, here we have the last fourth column. Okay, in this column we will see minus 1.9. There it is. Minus 1.96. That is equals to minus 0.02500. So this is your probability. It's 0.02500. So this is the probability that Z is less than minus 1.96. Alright, now we solve part 2. In part 2, we want to find probability that Z is greater than a particular point. Z is greater than 1.26. जब greater than की बात आती है तो मैं रेफरेंस दूंगी थ्योरम नंबर 10.3 के पार्ट 2 का सेकेंड पार्ट that if you want to find probability of Z greater than a point then this is equals to 1 minus phi of A. और इस थ्योरम को देखते हुए मैं अपनी इस probability को लिखती हूँ. This is equals to 1 minus okay, there it is, phi of 1.26. So this is equals to 1.26 is equals to, this is equals to 1 minus phi of 1.26. अब मैं phi of 1.26 को टेबल में देख लूँगी और उसको 1 में से माइनस कर दूँगी. That is equals to 1 minus, now I'm gonna find this probability. 1.2 को 6 में देखना है. ये देखें जी अभी नेगेटिव वैल्यूज दी की चल रही हैं, पॉजिटिव 1.2. ओके, दिस इज 1.2 और इसको मैं देखूंगी 6 में. दिस इज 6th कॉलम. ये देखें जी 1.2 एंड 6th कॉलम 0.89617. 0.89167. सो मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया. 1 माइनस 0.891167 तो मेरे पास आंसर आया है 0.1083933. So this is the answer. Simple मैं क्या कर रही हूँ, I'm using table number 9 and I am finding the value of phi which is less than A. Greater than को हमने पहले phi में convert किया और फिर हमने इससे यहाँ से phi की probability निकाल ली. अब आते हैं थर्ड केस. अगर आपके पास between का साइन है, minus 1.96 is less than Z is less than 1.96. तो आप क्या करेंगे? You are gonna use theorem number 10.3 का part 3 and theorem says if you want to find probability of Z that is between A and B then you find phi of B minus phi of A, यानी कि phi of upper value minus phi of lower value. इस theorem को जहन में रखते हुए मैं यहाँ पे इसी के अंदर values put कर देते हैं. Now A is minus 1.96 and B is 1.96. So this is A and this is B. Now upper value 1.96 minus lower value that is minus 1.96. Okay. Now I'm using table number 9 to find 1.96 and minus 1.96. So phi of 1.96. Okay, G, this is the 6th column. This is the 6th column. This is column number 6. 1 इसमें हमने देखना है 1.9. I'm moving on. This is 1.9.
0.97500, 1.9 or 6, 0.97500, 0.97500 minus, oh sorry, there it is. This is the value of phi 1.96 minus, अब minus 1.96 को देखते हैं. Minus 1.96. Okay, it is not there. This is minus 1.96. यहाँ पे है, ये देखें, sixth column. Okay, I am making it, zooming it out. Minus 1.9 है ये, और there is minus 1.9, and this is the sixth column. Yes, this is the sixth column. It is 0.02500. 0.02500. Now I will solve it in the calculator. 0.97500 minus 0.02500, 0.95. Alright, ये इसकी probability है, ये इसकी probability है. Okay, I'm sure it is clear to you all. Now in part 4th, we want to find, I shifted to the other page. Now, in part 4, we want to find the probability of z between case, but आप देख सकते हैं यहाँ पे जो lower limit है that is -5. इसके ऊपर टेबल नंबर 9 इस्तेमाल होगा और यही थ्योरम दोबारा इस्तेमाल होगा. इसको यूज़ करते हैं. Copy and paste. Lower limit is -infinity and upper limit is 2.12. Upper minus lower minus infinity. ओके, याद रखें कि phi of minus infinity होता है 0 के बराबर, तो इसकी जो phi of minus infinity होगा ये तो 0 हो जाएगा, और इसकी probability हम टेबल से देख लेंगे, 2.12. Alright. Yes, 2.1 यहाँ पे है, इसको 2 में देख लें, that is 0.98300. 0.98300 माइनस इसकी probability हो जाएगी 0, so ये equal है 0.98300. Alright, next part. Moving to the next part. Part 5. If you want to find probability in which you have phi on the uppercase, in previous part we had minus phi, minus infinity. In this question we have infinity. That means plus infinity. You can write it as plus infinity. Between का केस है, और आप देख सकते हैं कि between के केस में वही थ्योरम लगेगा. बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि प्लस इन्फिनिटी के जो आंसर है 5 of plus infinity, that is 1. So I'm gonna copy paste it. Alright, copy, paste, minus lower limit is minus 2.12 and the upper limit is plus infinity. Now, and minus 2.12. So we will use table number 9 to solve it. Now phi of plus infinity is equals to 1. We will write 1 minus, इसकी basically probability 1 होती है. अब phi of minus 2.12 को हम टेबल में देख लेते हैं. minus 2.1 को 2 में देख लेंगे. minus 2.1
Here it is, minus 2.1 को हम देख लेते हैं 2. And there it is 2, 0.017. 0.01700. That means 1 minus 0.01700, 0.98385. 0.98385. Here it is, part 4, part 6. If you want to find the probability of z in modulus form, you already have a theorem that is available, theorem number 10.4, it's part 3, कि अगर आपको probability of z निकालने है which is less than a, that is equals to 2 phi of a minus 1. तो इसको आप directly, this is exactly this form, and you can also write it as in this form. So I'm just gonna copy paste it. A is 1.64, so that is equals to 2 phi of 1.64 minus 1. So यहाँ पे आप टेबल नंबर 9 से आप इसकी probability देख लेंगे. 2 ब्रैकेट में probability 5 1.64 1.6. This is 1.6 and this is the fourth column. 1.64. ये देखें 0.9495. माइनस 1. ये देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ फाई की वैल्यू पुट की है और अब मैं इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करने लगी हूँ. 0.94950 minus 1, 0.899. It's very simple. You just need to apply these theorems and you need to find the value of phi, which is the cumulative probability, by using table number 9. It's very, very simple. Now the last part, part number 7, if you have the z in modulus form and it is greater than, if you want to find the probability of greater than some value, then you use then you will use theorem number 10.4 and its part number 4, which is probability that modulus of z is greater than a is equals to 2 phi of minus a. मैं इसको just copy paste कर रही हूँ, इसके अंदर values लिखेंगे 2.37. आपने ये probability find out करनी है और ये इसी पैटर्न पे है तो ये इसके बराबर होगी. a की जगह आ जाएगा 2.37. जब ग्रेटर देन की फॉर्म में हो तो ये माइनस ए हो जाता है. ये एक्चुअल में वैल्यू प्लस थी, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई किया तो ये माइनस 2.37 हो गई है. अब मुझे माइनस 2.3 को 7 में देखना है. टेबल नंबर 9, 2 माइनस 2.3 को 7 में देख रही हूँ. This is minus 2.3 and I am looking into the 7th. Yes, this is the 7th column. 0.00889. So I am going to solve it by using calculator. Zero point zero one 0.01778. Yes. So this is the probability. आज मैंने आपको बताया है कि हमारे पास अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो किन केसेस में. लेस देन, ऑलरेडी ये लेस देन की फॉर्म में होती है, दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए. ग्रेटर देन हो तो दैट इज 1 माइनस फाई ऑफ ए. बिटवीन का केस हो तो आपके पास phi of the larger value, upper value, minus phi of the lower value.
And further we discussed if we have a lower limit as minus infinity, that is equals to 0, and upper limit as infinity, which is equals to 1. Now, and further we discussed the modulus form in less than form and greater than form. You have already already have mentioned about the theorems, theorem number 10.3 and theorem number 10.4. It is available in your textbook. You can overview it, or you can see my previous lectures to make it clear, and you can easily find the probability of standard normal by using these theorems. Now I'm gonna give you the exercise questions for your homework. In exercise 10.1, you need to solve the question 2. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले दे दिया था. क्वेश्चन नंबर 3 इसके आपने सारे पार्ट करने हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इसका सिर्फ पार्ट बी करना है. मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो टेबल है वो सिर्फ 2 डेसिमल नंबर्स तक देखते हैं. अगर आपको कभी 3 डेसिमल नंबर्स में ए की वैल्यू दे दी जाए तो आप उसको 2 में कन्वर्ट करते हैं. यही हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा. फॉर इंटरपोलेशन आप पहले 3 डेसिमल्स को 2 डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे. सो देयर इज़ द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. फॉर एनी क्वेरी यू कैन कमेंट in below in my YouTube video. Thank you so much. Allah Hafiz.